बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद मज़हर अली और आप देख रहे हैं प्रोक्योरमेंट सीरीज़ की 5वीं वीडियो। चूँकि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में PPRA इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का सिर्फ तस्करा किया था और रूल्स नहीं पढ़े थे। हमने डिटेल से पढ़ा था कि प्रोक्योरमेंट क्या है, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स क्या हैं और डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट कौन से हैं। चूँकि मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट सारे प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी की तकरीबन एक ही है, इसलिए हम PPRA फेडरल रूल्स MCQs में पढ़ेंगे। एज अपडेटेड जून 2021 PPRAs के 9 चैप्टर है और 51 रूल्स हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। रूल्स 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है। रूल 2 से 7 तक जर्नल प्रोविजन है। रूल 8 से 11 तक प्रोक्योरमेंट प्लानिंग है। रूल 12 से 14 तक प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइजमेंट है। रूल 13 से 19 तक प्री क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन एंड सप्लायर्स एंड कंट्रैक्टर्स है। रूल 20 से 27 तक मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट है। रूल्स 28 से 37 तक ओपनिंग, एवेल्युएशन एंड रिजेक्शन ऑफ बिड्स है। रूल 38 से 45 तक एक्सेप्टेंस ऑफ बिड्स एंड अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। रूल्स 46 से 47 तक मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है। रूल्स 48 से 51 यानी लास्ट तक रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है। चूँकि प्रोक्योरमेंट के कई टॉपिक्स और मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट पिछले वीडियोस में हमने डिटेल से पढ़े हैं और सारे हमने कवर किए, इसलिए हम PPRA MCQs में पढ़ेंगे। और MCQs इस तरह तरतीब दिए हुए मैंने कि तकरीबन सारे PPRA रूल्स इसमें कवर हो जाएं। Dash agreement means an agreement with specified terms and conditions with an agreed price. Framework agreement, closed framework agreement, open framework agreement. Correct answer is closed framework agreement means an agreement with specified terms and conditions with an agreed price. Dash bidding means a procedure leading to award of contract whereby all interested person, companies or organization may bid. Number 1, competitive bidding, national bidding or international bidding. Correct answer is competitive bidding means a procedure leading to award of contract whereby all interested person or organization may bid. Call of order means an order placed by a dash under a closed framework agreement. So call of order means an order placed by a procuring agency or a contractor or authority. Correct answer is it is order placed by a procuring agency under closed framework agreement. Bid means a tender or an offer in response to invitation to undertake a specific task on a contract or on lease or at a price. Correct answer is at a price. So bid means a tender or an offer in response to invitation by a person, consultant for a company or an organization expressing his or its willingness to undertake a specified task at a price. Dash means a bidder that is declared by authority untrustworthy after establishing the fact that the bidder was found involved in any corrupt and fraudulent practices or practices. A contractor, blacklisted, corrupt. Correct answer is blacklisted. So blacklisted means a bidder that is declared by authority untrustworthy after establishing the fact that the bidder was found corrupt. Dash practices mean any impairing or harming or threatening to impair or harm directly or indirectly any party.
are the property of the party to influence the action of the party to achieve a wrongful gain. Number one is corrupt practices. Number two is coercive practices. Number three is collusive practices. Correct answer is coercive practices, which means any impairing or harming or threatening or impair or harm directly or indirectly a party. मतलब ये है कि किसी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना ताकि किसी पार्टी पर असरअंदाज होकर गलत तरीके से काम हासिल किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट या बिड हासिल किया जाए, तो इसको कोएर्सिव प्रैक्टिसेस कहते हैं. Dash bidder mean a person, consultant, firm, company or an organization who undertake to supply goods, services or works. Number one, contractor, bidder, national bidder. Correct answer is contractor means a person, consultant, firm, company or organization who undertake to supply goods. Dash practices, which means the offering, giving, receiving or soliciting directly or indirectly of anything of value to influence the act of another party for wrongful gain. Number one are corrupt practices. Number two, coercive practices. Number three, fraudulent practices. Correct answer is corrupt practices. सो करप्ट प्रैक्टिसेस वो होते हैं यानी बदनवानी, किसी कीमती चीज़ की किसी को पेश करना या वसूल करना जिससे प्रोक्योरमेंट मुतासर हो, तो उसको करप्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं. मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस विच मीन्स द ऑफरिंग और गिविंग, रिसीविंग और सोलिसाइटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनीथिंग ऑफ वैल्यू. क्रॉस debarred means a bidder debarred by any procuring agency shall be considered as debarred by PPRA also. All procuring agency, procuring entity only. Correct answer is cross debarred mean a bidder debarred by any procuring agency shall be considered debarred by all procuring agency. Dash practices, which means any act or omission including a misrepresentation that knowingly or recklessly mistake or attempts to mislead a party to obtain a financial or other benefit, to evade an obligation. So, corrupt practices, coercive practices, or fraudulent practices. Correct answer is fraudulent practices. Fraudulent practices, which means any act or omission including a misrepresentation that knowingly mislead or attempt to mislead a party to obtain a financial benefit. So, fraudulent practice मतलब है कि गलत बयानी करना या जानबूझकर या लापरवाही से किसी माली फ़ायदा हासिल करने के लिए ताकि प्रोक्योरमेंट या बिडिंग प्रोसेस मुतासर हो सके. Dash practices, which means any arrangement between two or more parties to the procurement process designed to stifle open competition for any wrongful gain and to establish prices at artificial, non-competitive levels. Number one are corrupt practices. Number two are coercive practices. Number three are collusive practices. Correct answer is collusive practices. So, collusive practices, which means any arrangement between two or more parties to the procurement process designed to stifle open competition. मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा आदमियों का गठजोड़ जो कि प्रोक्योरमेंट को मुतासर कर सके, रिंग वगैरह, इसको collusive practices कहते हैं. Dash means use of information and communication technology or digital or electronic means for procurement process. E-bidding, international procurement, e-procurement.
Correct answer is E-procurement means use of information and communication technology. Rule dash of PPRA deals with scope and applicability. Stated that all rules shall apply to all procurement made by all procuring agency of federal government. 2. Rule 3 or Rule 4. Correct answer is Rule 3 deals of Rule 3 of the PPRA deals with scope and applicability. Dash bid or proposal for goods, work or services that are meeting the eligibility or qualification criteria is found substantially responsive to the terms and conditions as set out in the bidding or request for proposal document and evaluated as the highest rank bid. So it is a advantageous bid, a most advantageous bid, a competitive bid. Correct answer is most advantageous bid or proposal for good work or service that are meeting the criteria, the eligibility or qualification criteria. Rules dash deals with international and international government commitment of federal government. Rule 5 deals with Rule 12. Rule 25. Correct answer is Rule 5 deals with international and intergovernmental commitment of the federal government. Under Rule 5, whenever these rules PPRA are in conflict with the obligation or commitment of the federal government arising out of international treaty or an agreement with the state or states or any international financial institution, the provision of dash rule shall prevail. Number 1, PPRA rules, international treaty or an agreement, or federal government. Correct answer is इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट. रूल 5 का मतलब ये है कि जब कभी हम इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट कर रहे हो या किसी डोनर की जो है ना फंडिंग हो और उसकी प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, तो इस तरह अगर कोई कन्फ्लिक्ट एराइज हो जाए तो कन्फ्लिक्ट में कौन से रूल्स प्रिवेल कर रहे हैं? कन्फ्लिक्ट में जो है ना इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट या डोनर के रूल जो है ना वो प्रिवेल कर रहे होंगे. तो उसमें पीपीआरए रूल्स जो है ना वो सेकंड प्रायोरिटी पे होंगे और फर्स्ट प्रायोरिटी पे और फर्स्ट प्रिवेल करेंगे इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट. Rule 6 deal with language and state that all communication and documentation related to procurement of the federal government shall either be in Urdu or in English or both, except where a procuring agency is situated outside the territory of Pakistan and procurement are to be made. The procuring agency may use both English or Urdu language, English language only, or the local language in addition to Urdu or English. Correct answer is the local language in addition to Urdu or English. रूल 6 का मतलब ये है कि पीपीआरए तो कहता है कि सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोक्योरमेंट के सारे डॉक्यूमेंटेशन में तो या इंग्लिश इस्तेमाल होगी या उर्दू इस्तेमाल होगी. लेकिन जब प्रोक्योरिंग एंटिटी प्रोक्योरिंग एजेंसी कभी पाकिस्तान से बाहर प्रोक्योरमेंट कर रही हो, फेडरल प्रोक्योरिंग एजेंसी, तो उस वक्त जो है ना वो लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकती है द उर्दू और इंग्लिश के अलावा. लोकल भी उसको जो है ना इस्तेमाल करने की इजाज़त है, वही कंट्री उसी मुल्क की लोकल लैंग्वेज. रूल 6(2) where the use of local language is found essential, the original documentation shall be in dash which shall be retained on record. In case of the dispute, reference shall be made to the original documentation retained on record. Correct answer, local language, Urdu or English, English language. Correct answer is Urdu or English. रूल 6 कहता है कि जब हम लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं मुल्क से बाहर जब प्रोक्योरमेंट कर रहे हों
तो द ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन जो होती है लोकल, तो हमने जो है ना वहीं पे इस्तेमाल की, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन में हम या तो उर्दू इस्तेमाल करेंगे या इंग्लिश इस्तेमाल करेंगे, हम लोकल लैंग्वेज उसमें नहीं इस्तेमाल करेंगे। और कोई डिस्प्यूट वगैरह एराइज हो जाए तो रेफरेंस हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से करेंगे। रूल 7A, the procuring agency may carry out dash process by using information and communication technology or digital or electronic media in such manner as to cover any all respect of procurement process. Competitive bidding process, e-procurement, e-bidding. Correct answer is e-procurement. Rules dash deal with limitation of splitting or regrouping of proposed procurement. Rule 9 deals with, Rules 8 deals with, Rules 7 deals with. Correct answer is Rule 9 deals with limitation on splitting or regrouping of proposed procurement. As per Rule 9, the annual requirement thus determined would be advertised in advance in at least 2 daily newspaper, procuring entity website, both procuring entity and authority website. Authority mean PPRA. Correct answer is both procuring entity and authority website. So the annual requirement would be advertised in advance in both procuring entity and authority website. Rule 9 ये procurement planning के मुताबिक है, जो annual requirement जब determined हो जाते हैं तो उसको इन दोनों पे जो है ना वो कराना चाहिए. As per Rule 12, method of advertisement, procurement over dash Pakistani rupee shall be advertised on authority website as well as on print media if deemed necessary by procuring agency. Advertisement from 0.5 million to 3 million, मतलब कि 5 लाख से 30 लाख रुपए तक, या 5 लाख रुपए, या 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक. तो करेक्ट आंसर है 5 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक जो एडवर्टाइजमेंट हो उसको अथॉरिटी की वेबसाइट पर देना लाजमी है, प्रोक्योरिंग एंटिटी की वेबसाइट पे और अथॉरिटी की वेबसाइट पे. अगर प्रोक्योरिंग एंटिटी ज़रूरी समझे तो उसको प्रिंट मीडिया में भी जो है ना वो एडवर्टाइज करनी चाहिए, लेकिन प्रिंट मीडिया में लाजमी नहीं है, अथॉरिटी वेबसाइट पे ये देना लाजमी है. 5 लाख से 30 लाख तक जो कास्ट के प्रोक्योरमेंट हो उसको. All procurement opportunity over dash Pakistani rupees should be advertised on authority website as well as in the other print media or newspaper having wide circulation. The advertisement in the newspaper. 3 million, 1 million, 5 million. Correct answer है 3 million. All procurement opportunity over 3 million Pakistani rupees should be advertisement on authority website as well as in the print media or newspaper. मतलब है कि 30 लाख से ज़्यादा जो प्रोक्योरमेंट हो तो उसको अथॉरिटी वेबसाइट पे और न्यूज़पेपर में भी देना लाजमी है. Rules 13 deals with response time. The response time shall not be less than dash days for national competitive bidding and dash days for international competitive bidding. 14 days for national or 20 days for international is correct. 15 days for national and 30 days for international is correct. Or 10 days for national and 15 days for international is correct. Correct answer is the response time shall be 15 days for national competitive bidding and 30 days for international competitive bidding from the date of publication on advertisement or notice. 15 डेज जो आप नेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग कर रहे हैं तो उसको लोकल जो है तो उसमें अखबार में कम से कम 15 दिन आपको देने होंगे
रिस्पॉन्स टाइम के लिए, और 30 डेज अगर हम इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो उसमें 30 डेज तक जो है ना वो गैप रखना चाहिए। 30 डेज से कम हो तो ये मिस प्रोक्योरमेंट कहलाएगी। अंडर रूल डैश, अ प्रोक्योरिंग एजेंसी में एंगेज इन प्री क्वालिफिकेशन ऑफ बिडर्स। ये रूल तो काफ़ी लंबा है, लेकिन मतलब इसे का ये है कि कौन सा रूल्स, विच रूल डील्स विद प्री क्वालिफिकेशन ऑफ बिडर्स एंड सप्लायर्स। सो Rule 16 deals with the pre-qualification of bidders and suppliers. Rule 10 deals with, Rule 15 deals with. Correct answer is Rule 15 deals with pre-qualification of bidders and suppliers for turnkey projects. Under Rule 19, the procuring agency shall advise a comprehensive mechanism for blacklisting and debarring of bidder. ये तो काफ़ी लंबा है ये क्लास, लेकिन मतलब इसका ये है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी जब किसी को डिबार करती है, जब उस पर करप्शन या फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस साबित हो जाए, तो क्रॉस डिबार या ब्लैकलिस्ट जब करे तो उसको मैक्सिमम कितने साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर सकती है। 10 ईयर के लिए, या 15 ईयर्स के लिए, या 5 ईयर्स के लिए। तो करेक्ट आंसर ये है कि मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए जो है ना वो डिबार या ब्लैकलिस्ट कर सकती, क्रॉस डिबार या ब्लैकलिस्ट कर सकती है, मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए। Blacklisted and henceforth cross debar for participation in respective category of public procurement or disposal proceeding for a period of not more than days if the bidder fails to abide by with the bid securing declaration, however without being indulged in any corrupt or fraudulent practices. मतलब इसका ये है कि अगर कोई बिडर बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन में फेल हो जाए, उस पे करप्ट प्रैक्टिसेस या फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस ये साबित ना हो, लेकिन सिर्फ बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन या बिड सिक्योरिटी वगैरह वो न लाए बिड के साथ जो उसने डिक्लेरेशन की, तो उसमें अगर वो फेल हो जाए तो वो कितने साल के लिए आप उसको डिबार या ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं? 1 ईयर के लिए, या 2 ईयर्स के लिए, या 6 मंथ्स के लिए। तो करेक्ट आंसर है कि मैक्सिमम 6 मंथ के लिए आप एक बिडर को डिबार या ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं जब वो बिड डिक्लेरेशन में फेल हो जाए, सिक्योरिंग डिक्लेरेशन में फेल हो जाए, उस पर ये दूसरे करप्ट या फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस साबित न हो, तो मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए। Rule 25 deals with bid security. The procuring agency may require the bidder to furnish a fixed amount of bid security not exceeding -% of the estimated value of procurement determined by the procuring agency. तो bid security कितने परसेंट लेनी चाहिए, मैक्सिमम कितने परसेंट तक होनी चाहिए? 5% तक होनी चाहिए, या 2% तक होनी चाहिए, या 10% तक होनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर है कि बिड सिक्योरिटी मैक्सिमम 5% तक आप ले सकते हैं, 2% भी ले सकते हैं, 3%, 4% और मैक्सिमम 5% आप ले सकते हैं। Under Rule 26, the procuring agency shall ordinarily be under an obligation to process and evaluate the bid within the dash period. 30 days. Stipulated bid validity period 90 days. Correct answer is stipulated bid validity period. So the procuring agency shall ordinarily be under obligation to process and evaluate the bid within the stipulated bid validity period. तो प्रोक्योरिंग एंटिटी जो बिड प्रोसेस करेगी या कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेगी, तो ये टाइम जो है इसको बिड वैलिडिटी पीरियड कहते हैं। तो जो स्टिपुलेटेड बिड वैलिडिटी पीरियड उसने बिडिंग डॉक्यूमेंट में दिया होता है, तो उसके अंदर ही जो है ना वो सारा प्रोसेस करेगा। अंडर रूल 26(3) under exceptional circumstances, the bid validity period can be extended not more than dash period. 30 days, 2 months,
are equal to the original bid validity period. Correct answer is equal to the original bid validity period. अच्छा, जो bid validity period है, तो इसको जब एक्सटेंड करेंगे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अंडर रूल 26। तो उसको कितना हम कर सकते हैं, उसको इक्वल टू ओरिजिनल बिड वैलिडिटी पीरियड जो हमने बिडिंग डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, तो मैक्सिमम उसके जो है ना जितना हमने फर्ज कर 90 डेज हमने दिया हुआ है, तो 90 डेज मजीद हम बिड वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं। Under Rule 28, opening of bids, the date for opening of bids and the last date for the submission of bid shall be dash. First may not be the same, shall be the same, shall be after the last date of submission. Correct answer is shall be the same, that the date for opening of bids and the last date for submission of bids shall be the same. जब हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं किसी प्रोक्योरमेंट का, तो उसमें जब हम बिड ओपन करेंगे तो वो डेट और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ बिड शैल बी द सेम. In single stage one envelope procedure, each bid shall comprise one envelope containing separately financial proposal, technical proposal, financial proposal and technical proposal if any. Correct answer is financial proposal and technical proposal if any. अच्छा, ये हमने सिंगल स्टेज टू एनवेलप जो मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट है, सारे सिंगल स्टेज टू एनवेलप प्रोसीजर, तो ये सारे हमने प्रीवियस वीडियो में प्रोक्योरमेंट के जो अपडेटेड के PPRA वीडियोज़ है, तो उसमें हमने डिटेल से पढ़ी हुई और ग्राफिकली हमने जो है ना वो सारे एक्सप्लेन किए हुए कि सिंगल स्टेज टू एनवेलप किस तरह होता है और सिंगल स्टेज वन एनवेलप प्रोसीजर किस तरह होता है. तो वन एनवेलप प्रोसीजर, सिंगल स्टेज वन एनवेलप प्रोसीजर, उसमें ये एक एनवेलप होता है और हम एक ही एनवेलप जो ओपन करते हैं और उसी को वेटेज देते हैं. उसमें फाइनेंशियल तो लाजमी होगा, अगर उसके साथ टेक्निकल भी हो तो टेक्निकल भी उसके साथ आ सकता है. In single stage two envelope procedure, initially only the envelope marked dash shall be open. Correct answer is financial proposal be open first, or technical proposal shall be open first, or a financial proposal and technical proposal both shall be open. Correct answer is first technical proposal shall be open. Under which rule the procuring entity, the procuring or the procuring agency shall consider single bid in goods, work or services if meet the evaluation criteria, compliance of specification and other terms and conditions expressed in the advertisement or bid solicitation document. Under Rule 38, 18 or 28, correct answer is 38. Under Rule 38, the procuring agency shall consider single bid in goods, works or services. Rule 38 कहता है कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट दे दें और सिर्फ एक ही बिडर बिड सबमिट करे तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर वो एवेल्युएशन क्राइटेरिया पे पूरा उतरता हो या जो कंडीशन हमने दी हुई है वो उस पे वो फुलफिल करते हों. Under Rule 42, alternative method of procurement, procuring agency may provide for petty purchase through single quotation up to the financial limit of dash Pakistani rupees. 50,000, 30 लाख या 1 लाख. करेक्ट आंसर है कि पेटी परचेज हम 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं सिंगल कोटेशन पे. Where the value of procurement is more than dash Pakistani rupees but doesn't exceed dash Pakistani rupees, the procuring agency may engage in procurement through 3 quotation from GST registered form. 3 quotation की लिमिट कितनी है? 1 लाख से 5 लाख तक है या 30 लाख से 50 लाख तक है या 5 लाख से 30 लाख तक है. करेक्ट आंसर है 1 लाख से अगर ज़्यादा हो और 5 लाख रुपए से कम हो
तो हम 3 कोटेशन जीएसटी रजिस्टर फॉर्म से ले सकते हैं विदाउट एडवर्टाइजमेंट इन द प्रिंट मीडिया. Under Rule 42C, the procuring agency may or may not engage in direct contracting. The procuring agency can engage in direct contract or cannot engage in direct contracting. Can engage in direct contractor under some condition already described. So correct answer है can engage in direct contractor under some condition already described. मतलब इसका ये है कि under some circumstances the procuring agency can go for direct contracting without advertisement. Under which rule a procuring agency may engage in direct contract with state-owned entities such as professional, autonomous, or semi-autonomous organization or consultant. Rules 30 or Rule 42F or Rules 37. Correct answer is under Rule 42F. A procuring agency may engage in direct contracting with state owned entities. मतलब इसका ये कि हम स्टेट ओन्ड एंटिटी के साथ हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं, जिस तरह के WFO या निस्पाक या जो गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट के जो प्रोक्योरमेंट के इदारे हो या कंसल्टेंसी, गवर्नमेंट की कंसल्टेंसी हो निस्पाक वगैरह, तो उसके साथ हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं अंडर 42F. Under Rules 42E, force account. A procuring agency may use force account if the value of procurement doesn't exceed dash Pakistani rupees, subject to some conditions. 200 million, 300 million, 100 million. Correct answer is 200 million. A procuring agency may use force account if the value of procurement doesn't exceed 200 million. Under Rule 46, record of procurement proceeding. All procuring agencies shall maintain a record of their respective procurement proceeding along with all associated documentation for minimum period of dash years. Procurement की रिकॉर्ड कितने साल तक रखनी चाहिए? 10 साल तक या 5 साल तक या 2 साल तक? तो procurement की रिकॉर्ड कम से कम 5 साल तक रखनी चाहिए. Correct answer is 5 years. Rules 51 deals with, this is the last rule, misprocurement, arbitration, overriding effect. The correct answer is the last rule of PPRA is related to overriding effect. Thanks. Jazakallah. Please like and subscribe the channel.